So far, only 20 students have joined in. In morning sessions, we have seen that around 70 students remain present for the morning session. But today, so far, only 20 have joined. Okay, no problem. No issues. Please. Yes, so this change in timetable, that is instead of taking lectures 10 to 5, we have changed this timetable. That is early morning we are taking lectures, late evening also we are taking lecture. It is only on the request of the students. At the time of admission, as most of the students have requested director sir that if possible, please arrange the online sessions in either morning or late evening. And director sir accepted that demand, and we have scheduled the lectures that way only. But if such is the scenario, we need to update director sir also that if the students are not taking these lectures seriously, then the last option available to us will be that instead of taking lectures in these odd times, we will be taking the lectures between 10 to 5. That is one thing which we will be discussing with the director sir also. Now the next thing is that last month we have shared some of the magazines. We were expecting that at least some of you will be asking for more such magazines. For complete 1 month has passed, or more than 1 month has passed, and we have not shared you the magazines of January. I think we have shared you the magazines of December 2021. We have got with us the e-copies of these business magazines, but we were waiting for the responses of the students. None of the student has updated that these magazines, yes, they are beneficial for us, and do send these magazines every month. We were expecting that at least some of you will be updating us regarding those magazines. How many of you have downloaded those magazines? So now 24 students are there. How many of you have downloaded those magazines? Please remember that the institute is paying money for the subscription of e-copies. It is not coming free of cost. And it is for your benefit only we are subscribing to it. Yes. Okay, I'll change my question. Any one of you who has downloaded those magazines? Anyone who has downloaded those magazines? I hope my voice is clear to all. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? यस सर। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब मुझे बताइए कि किस स्टूडेंट ने जो मैगजीन, शायद 8-10 मैगजीन थे जो हमने दिसंबर के महीने में आपको भेजे थे, किसने डाउनलोड किया है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने डाउनलोड किया है? दिसंबर में या जनवरी में शायद हमने भेजे हैं। अब नेक्स्ट मंथ का फेब्रुवरी की कॉपीज हमारे पास आ गई हैं, पर हम लोगों ने जस्ट एक जानना चाहते थे कि बच्चे सही में यूज कर रहे हैं, हमारे को कंटिन्यू करना चाहिए या वो उसे स्टॉप कर देना चाहिए।
तो हम लोग भी डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं उसके बारे में। यस, किसी ने डाउनलोड किया है? जी सर, मैंने डाउनलोड किया है। किया है, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज उमाकांत वड़जे। वेरी गुड। कौन से डाउनलोड किया आपने मैगजीन? टॉप 1000 कंपनी इन फाइनेंशियल डेटा, इंडियन बिजनेस, द इकोनॉमिस्ट ऑफ 31 December 2021, हाँ बिजनेस टुडे, हाँ डेटा स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, हाँ। एम्प्लॉयमेंट, ईटी वेल्थ, अच्छा। डायरेक्ट ईयरली आउटलुक 2022। हाँ, ये सब आपने डाउनलोड किया? जी सर, मेरे ठीक है, पास। पढ़े क्या ये? सर थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्लीज try to understand that these magazines are going to help you at the time of placements, sir. Because when we will be calling the companies in the college, or we will be sending you for placement interviews, at that time when number of candidates will be there for a same position, for a single position, or for 2 3 5 positions are there, and for that 50 students are there to be interviewed, at that time they are going to check what extra you have learned apart from the university curriculum, and that extra we are trying to share with you. In fact, we had also planned that we will be having a presentation session wherein the students are going to give presentation on what article they have read from that e-magazine. Suppose if you have read an article related to what is happening to Tesla in India, what is the stand of government on Tesla. So if you have read that article in Business India, then give presentation so that other student can also understand what is happening in India. Then if you have read any article in Fortune 500, why a company is included in Fortune 500, if you have read the article, give a presentation. It will not only improve your knowledge, but is also going to help your friends also who will be attending your presentation. So we have planned everything that we will be doing this. But director sir has asked us to check whether the students have downloaded the magazine, and if downloaded, whether they have opened these magazines, whether they have started reading these magazines. If you are ready, we are ready with the entire schedule of presentations. We have prepared a slot also, that on these on every day from Monday to Friday, every day one slot we have prepared, and in that slot at least 5 6 or 7 students will be giving presentation of 5 minutes each. After the presentation, then we will have question and answer session also. Language is no bar, and this is going to give you that extra which the company is looking for, because each and every company wants the MBA student to be employable, and just by reading the curriculum you are not going to be employable. For employability, you need to have that skills, and for those skills we are trying to give you as much as we can. जितना हमसे हो सकता है उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने, हम लोगों ने आपको पहले भी बताया, डायरेक्टर सर के इंडक्शन के स्पीच में ही उन्होंने बताया था कि when you are paying fees to the college, try to extract your whole fees from the college. वसूल करो कॉलेज से। कैसे? सर हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये चाहिए।
and we are very much open. Now, one student is there in your batch. Day before yesterday, he called me up, and his name is Guru Prasad. He called me up and he gave me the feedback. And the feedback was that all the guest lectures are very good. The lectures are also going on well. So he requested, or he gave a suggestion, sir, is it possible that in the coming Saturday, can we have a guest lecture on budget so that we will understand budget in a better manner? I immediately brought it to the notice of director sir. Director sir immediately contacted the CA. Dr. Ajotikar helped director sir in contacting the CA, and Dr. Vaishali has immediately planned the session. So tomorrow you will be having that session. So we are very much open. आप अगर हमें suggestion देंगे और अगर वो suggestion अच्छा है तो immediately we will try to implement that. And director sir also liked that a student coming forward and he is giving a suggestion which is very genuine, which is very valid, that just now budget has been declared, and as a MBA student each one of us should be aware of budget. So this thing we are expecting from all the students. आज एक स्टूडेंट ने सजेशन दिया, हमने इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट किया. हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमें और सजेशन दीजिए. सर ऐसा हो सकता है क्या, और ये लेक्चर कर सकते हैं क्या, हम लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं क्या, हमारे लिए इंटरव्यू टेक्निक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके कुछ सेशंस हो सकते हैं क्या? We are very much open for that. We are ready for everything. One lecture still is pending, which we will be conducting in the next week itself, and that is related to your NPTEL courses. In the induction, director sir has informed you that we will be giving you some NPTEL courses also. So we will be having a session on NPTEL courses also, where we will update you about all the courses, do's and don'ts of those courses, the fees of those courses, every detail we will be sharing. So from our side, we are trying to do as much as we can. We expect same 100% from your side also. And this is going to motivate us for doing more and more for you, right? So this is from our side. So suggestions are most welcome. So from your batch, only one student, I have just named that student also, he is Guru Prasad Kale. He had suggested, and we had, and as the suggestion was very good, immediately director sir acted, and we have planned a session tomorrow itself. So please, all of you attend tomorrow's session, plus request your friends also that please be present for such sessions. जितना आप कोशिश करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि सेकेंड ईयर के मॉक एग्जाम्स शुरू हो गए हैं. ठीक है, तो बहुत जल्दी शायद आपका भी डेट्स डिक्लेयर हो सकते हैं. मार्च में हो सकते हैं आपके एग्जाम, या फिर अर्ली अप्रैल में भी हो सकते हैं. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आल्सो, राइट? नाउ वी विल मूव ऑन टू दी our topic. We were discussing the contract of sale of goods that we will start with. I hope that everyone can see my screen. Yes. Okay, thank you.
Yes, and if you have any suggestions, please give us a call. डायरेक्ट कॉल करेंगे तो भी चलेगा, हमें कॉल कीजिए, बताइए सर ऐसा अगर हो सकता है क्या, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, वी आर टीचर्स, वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर डायरेक्टर सर, we can give the suggestion, we can forward that suggestion to director sir, if possible he will approve it, and if it is approved we will try to implement that immediately. कुछ भी अगर आपको लगता है तो प्लीज हमारे को बताइए, वी आर वेरी मच ओपन टू इट, राइट. और ट्राई टू अवॉइड सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने सारे व्हाट्सएप आते हैं तो किसी किसी का व्हाट्सएप शायद ओपन भी नहीं हो पाता होगा, तो हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि कॉल कर लो, अगर कॉल नहीं उठाते हैं हम लोग तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें, ठीक है. यस, सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वी वर डिस्कस, एंड there we had discussed that transfer of property, whenever this term comes in the sale of goods, it is always treated as transfer of ownership. The moment buyer purchases a product, the moment the buyer pays for that product, there is transfer of property, there is transfer of ownership, and that is what we are going to discuss in today's session of under contract of sale of goods. So there are three stages in performance of contract of sale by the seller, which are transfer of property in goods, delivery of goods or transfer or possession of goods, and passing of the risk. Have we discussed this? ये हो गया है क्या हमारा? फिर नेक्स्ट स्लाइड नहीं तो देखता ये हुआ है या नहीं हुआ है? दो नहीं पॉइंट्स सर, नहीं सर. हेलो, हो गया है क्या ये? नहीं सर. Okay, okay. Yes, so transfer of property in goods. Transfer of property in goods means transfer of ownership in goods. So buyer went to purchase a mobile, he selected a mobile and he paid the price for the mobile. So before he paid the price of the mobile which was there in the seller's shop was under the ownership of seller. But the moment the buyer has paid 15,000, 20,000 or whatever the price of the mobile is, immediately the seller ceases to be the owner of that mobile and the new owner of that mobile will be the buyer. So that is called as transfer of property in goods. So transfer of ownership in goods. अभी तक वो मोबाइल सेलर की ओनरशिप में था, जैसे ही बायर ने पैसे पे कर दिए अब ओनरशिप बदल गई है, अब ओनर कौन है? अब बायर है, सेलर अब उसका ओनर नहीं रहा. So that is called as transfer of property in goods. Next point, delivery of goods or transfer of possession of goods. Delivery of goods means when the delivery means when the mobile is given in the possession of the buyer, then it is called as the goods have been delivered or possession of goods is shifted from seller to the buyer. Ownership has already shifted at the time when the buyer has paid the money, ownership has shifted. Now the second thing is possession of the goods. The moment he get the possession of that goods, that is called as the delivery of goods. Now this delivery of goods can be immediate or can be after some time or after 1 day or after 2 days or maybe after a
period of time, 3, 4, 5, 6, 7 days. So here the conditions depends upon, or the terms and conditions of the contract of sale of goods. Now Mr. A, who is buyer, has purchased the refrigerator. He has paid for the refrigerator. So when he has paid for the refrigerator, that means he has now become the owner of that refrigerator. But that refrigerator is still in the shop seller. Not got the possession of that refrigerator. When we can say that he has got the possession of the refrigerator? When the refrigerator will be delivered to the address of the buyer. Once it reaches his house, then we can say that buyer has got the possession of the goods. Now here, suppose price the buyer has paid 20,000 rupees for the refrigerator, and he wants the immediate delivery from the seller. Seller checks with his tempo person, and he comes to know that the tempo is having some technical problem. So he requests the buyer that today it is not possible for us to deliver the refrigerator to your place. Tomorrow by 11 a.m. definitely you will receive the refrigerator from our side. So here delivery will take place tomorrow later on, but transfer of property or ownership has already taken place because the buyer has paid the amount. So that is the difference between transfer of property and delivery of goods. So delivery of goods can be later on, transfer can be earlier, or it can be immediate also. That he has bought the refrigerator, he has paid for the refrigerator, and as he comes to know that the tempo of the shopkeeper was having some problem, he himself arranged, that is buyer can himself arrange for that tempo, and he can take the possession and he can take the refrigerator to his place. If such is the case, then the delivery will be considered as that when the refrigerator has been loaded to the tempo. जैसे ही रेफ्रिजरेटर दुकान में से उठाया और टेम्पो में रख दिया, डिलीवरी इज ओवर. अब यहां पर क्यों घर तक डिलीवरी नहीं मानी गई? क्योंकि घर तक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वहां पे सेलर ने बोला था कि मैं आपके घर पे डिलीवर करूंगा, इसीलिए डिलीवरी ऑफ गुड्स कहां होने वाला है? घर पे. अब जो दूसरा एग्जांपल है वहां पर क्या है कि टेम्पो खराब है, इसीलिए बायर खुद बोलता है कि पड़ोस में एक टेम्पो खड़ा है, मैं उससे बात करता हूं, उसको लेके आता हूं और मैं आज की आज लेके जाता हूं. इसीलिए क्या हुआ यहां पर? डिलीवरी, पोजेशन चेंज हो गया. पोजेशन अब घर की जगह सिर्फ टेम्पो में उसको लोड करना है रेफ्रिजरेटर. जैसे ही टेम्पो में लोड हुआ, सेलर इज फ्री फ्रॉम द डिलीवरी. नाउ सेलर हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड द रेफ्रिजरेटर. अब घर जाते वक्त अगर टेम्पो का एक्सीडेंट हो जाता है तो सेलर को नुकसान भरपाई देनी चाहिए क्या या नहीं देनी चाहिए? दूसरा एग्जाम्पल. हाँ, नहीं देनी चाहिए, राइट? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, नहीं देनी चाहिए. क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए. यहां पर बायर ने क्या बोला कि आप मुझे, मैं टेम्पो लेके आता हूं, आप सिर्फ लोड करके दे दीजिए. लोड करने तक ही डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेलर का.
जहां पर लोड हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब टेम्पो घर तक जा रहा था, बीच में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में फ्रिज को नुकसान हुआ। अब फ्रिज को नुकसान हुआ, बायर आया सेलर के पास कि मेरे घर तक तो फ्रिज पहुंचा ही नहीं था, अब फ्रिज का बीच में ही एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे नुकसान भरपाई आपसे चाहिए। इस कंडीशन में सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? बिकॉज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल says that the responsibility of the seller has ceased from the moment the fridge was loaded on arranged by the buyer. बायर ने रिस्क लिया, इसीलिए यहीं पर वो खत्म हो गया। पर अगर हम पहला एग्जाम्पल पकड़ेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल वाज व्हाट, कि आज के दिन आप फ्रिज रहने दीजिए, मेरा टेम्पो खराब है, कल जैसे ही मेरा टेम्पो रिपेयर हो जाता है, या आज मेरा टेम्पो रिपेयर हो जाएगा शाम तक, कल सुबह 11 बजे तक आपके घर में रेफ्रिजरेटर पहुंच जाएगा। अब कल 11 बजे जब रेफ्रिजरेटर जा रहा था, तब वापस रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो गया, सेलर जवाबदार है या नहीं? यस सर, रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर सेलर इज रिस्पॉन्सिबल बाय व्हाई? Because according to the term and condition of the contract of sale, it says that the seller has promised the buyer that tomorrow by 11 a.m. you will receive the refrigerator at your place. तो जब तक उसके घर तक वो डिलीवरी हो नहीं जाती, तब तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की। सेलर इज 100% responsible. Seller has to compensate the buyer. So whether the seller is responsible or not, it all depends upon the terms and conditions of the contract. If buyer goes to the court to claim compensation, court again will try to understand the term and condition of the contract, and after knowing the terms and conditions of the contract, then the decision will be given by the court. So everything is dependent upon the terms and conditions. कब responsible है, कब नहीं है seller compensation के लिए, that we have to keep in mind, and then and it is how we can come to know whether he is responsible or not, by understanding the terms and condition of the contract. अगर सेलर ने पूरी जवाबदारी ली है तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो ले रहा था, अपन बायर ने बोला नहीं उधर पड़ोस में टेम्पो खड़ा है, मैं उसे लेके आता हूं, आप सिर्फ चढ़ा दो, मैं मेरा लेके जाऊंगा, आप 1000 रुपए इसमें से कम कर दो, और सेलर वो मान जाता है, सेलर 1000 रुपए कम कर देता है बिल में से, या 500 रुपए कम कर देता है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि सेलर का रिस्क नहीं है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेलर की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टेम्पो आया है वहां पर लोड हो जाए, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी शुरू हुई? बायर की। नेक्स्ट वन, पासिंग ऑफ द रिस्क, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ। पासिंग ऑफ द रिस्क, कि रिस्क किसके ऊपर रहेगा? तो we have to first read and understand the terms and conditions. Then we will be able to understand that who is responsible for that loss. If seller is responsible, seller has to compensate. If there is seller is not responsible, there is no question of compensating buyer by the seller. So that is called as पासिंग ऑफ द रिस्क। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा कि टेम्पो खराब है, बायर ने कहा सामने ही एक टेम्पो खड़ा है, वो टेम्पो लेकर आ गया, और जैसे ही टेम्पो में फ्रिज सेलर ने लोड कर दिया, सेलर ने क्या किया है? ही हैज पास्ड द रिस्क
टू दी बायर। अब रिस्क पास हो गया है बायर को, अब बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होता है एक्सीडेंट में तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो दैट इज कॉल्ड एज पासिंग ऑफ द रिस्क। अगर सेलर ने बोला है कि मैं कल आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा, आज मेरे टेम्पो में प्रॉब्लम है और बायर इज रेडी, तो टर्म एंड कंडीशन क्या हुए कि बायर इज रेडी, ओके नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर दैट द रेफ्रिजरेटर रीचेस माय प्लेस and seller has agreed that please give me just one day, today by evening my tempo will be repaired and tomorrow I guarantee you, I promise you that your fridge will reach your house by 11 a.m. So he has taken the responsibility. Who? The seller has taken the responsibility. Now in the night there was a fire because of short circuit or because of some reason, and in that fire the refrigerator of the buyer which was purchased by the buyer got damaged. ये आग लग गई, आग में वो रेफ्रिजरेटर जल गया, खराब हो गया, पूरा उसका नुकसान हो गया। अब यहां पर सेलर को नुकसान भरपाई देनी है क्या? क्योंकि बायर ने तो पैसा दे दिया है। सेलर ये बोल सकता है क्या, कल मैंने आपको बिल बना के दे दिया है, अब आप उसके ओनर हैं, मतलब सेलर ओनर नहीं है, आप कौन ओनर है? बायर। पोजेशन में बेशक अभी भी सेलर के है, पर उसका ओनर कौन है फ्रिज का? तो ओनर कौन है? तो बायर ओनर। बायर ने अभी तक पोजेशन नहीं लिया है, पोजेशन कल मिलने वाला है 11 बजे तक, और रात को ही फ्रिज जल गया आग की वजह से। अब बायर आता है कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए या नया फ्रिज लेने के लिए, मुझे नहीं पता, मुझे नया फ्रिज चाहिए। अब यहां पर सेलर को देना चाहिए उसे फ्रिज या नहीं देना चाहिए? यस सर, देना चाहिए। तो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन वैसे थे। सेलर ने ही उसको बताया था बायर को, आज की रात मेरे पास रहने दो, आज के दिन मेरे पास रहने दो मेरे गोडाउन में, मैं सुरक्षित रखूंगा, कल सुबह सही सलामत आपके घर पर 11 बजे तक पहुंच जाएगा। सो पासिंग ऑफ रिस्क वो हैड नॉट टेकन प्लेस। यहां पर पास हो गया था क्या रिस्क सेलर से बायर को? नहीं, यहां पर रिस्क सेलर के पास ही था। कब वो पास होने वाला था? जब वो फ्रिज 11 बजे अगले दिन बायर के पास पहुंच जाएगा, तब वो पास होने वाला था। तो पास होने से पहले अगर कोई भी हादसा होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो यहां पर सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। तो कोर्ट में कभी भी जब भी केस होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन द जजमेंट इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। सो दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप। नेक्स्ट, the determination of exact moment as to when the ownership pass from the seller to buyer is important for the following reasons. Number one, risks of the property, insolvency, damages, and suit for price. That also we have already discussed. So it all depends upon the terms and conditions कि ओनरशिप पास हुई थी या नहीं। ओनरशिप तो पास हुई थी पर पोजेशन पास नहीं हुआ था, ओनरशिप तो पास हुई थी पर रिस्क पास नहीं हुआ था। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट which will find that who is responsible, whether the seller is responsible to compensate the buyer. The easiest way to find out is to check the terms and conditions. Then only we will be able to understand that whether the ownership
risk has passed or not, or whether the seller has to compensate the buyer or no need to compensate the buyer. Now the next one is performance of contract of sale. I'll just read the information written on the slide and then we will discuss. For seller, performance of contract of sale means the delivery of goods, and for the buyer, it means acceptance of delivery of goods and to make the necessary payment of the goods he purchases according to the terms and conditions of the contract of sale. So again, it is very simple. All these things we have already discussed, that in contract, performance of contract of sale, we had discussed performance of contract of agency, we have discussed performance of contract of guarantee, we have discussed performance of contract, and on that lines, on that grounds only, we need to understand performance of contract of sale. When we can say that the performance of contract of sale has taken place, when we can say that the contract of sale is over or is complete. So it is mentioned there when the ownership has passed, as well as when the delivery of the goods have passed or have reached the buyer from the seller. At that time, we can say that performance, that can be called as performance of contract of sale. Yes, now there are three types of delivery of goods. Now goods are to be delivered. Ownership may take place early, or it can be concurrent also, that immediately the person has paid the price of the goods and immediately he has received that goods. मोबाइल के 20,000 रुपए दिए, इमीडिएटली जो सील पैक पीस था मोबाइल का वो बायर के हाथ में आ गया. दिस टाइप ऑफ से transfer of property will be called as immediate, and immediately the contract of sale is complete, because the buyer has paid the amount of the mobile phone and immediately he has received the bill as well as the complete box containing that mobile phone from the seller. Or there can be that he has paid the amount and tomorrow the goods will reach his place. Now we are talking about delivery of goods. So there are three types of delivery of goods which can take place in the contract of sale. First one is called as actual delivery. Next one is symbolic delivery, and the last one is constructive delivery. Actual delivery, very simple. Actual delivery. Who is going to explain actual delivery? We just have to understand the meaning of the word actual. Rest is very simple. अगर आपको actual word का मतलब पता है तो everything is clear. What do you mean by actual? Real. Real. Can you give me example? From the first lecture itself, I am trying to say convince you for participative type of session. Hello. But yes, Sir, Anurag. maybe yes, sir. हाँ. Sir, maybe the real-time delivery, पैसा देके delivery लो या possession लो. Actual delivery. हाँ. Can you give me? Yes, it is correct. Can you give me example? Yeah, Both you just the gave one reasons example. are correct. Just give 20,000 rupees for a mobile, and that mobile will be given to you from the shop. हाँ.
So So that this will can be be called your as, actual delivery. very good. So this is called as actual delivery. Now, if you are participating in session, even if the answer is wrong, don't worry. No worries, we are not here to deduct your marks. ऐसा नहीं है कि मैं immediately डायरी में लिखने वाला हूं, अच्छा Mr. So and so or Miss So and so has given a wrong answer. Okay, what is her roll number? What is his roll number? I'll write it down on a diary, and at the time of finalizing your internal marks, we will be deducting if 2 answers were wrong or 3 answers were wrong. But please remember, even if the answers are wrong and if you are trying to participate more and more, that means you will be getting more internal marks from the rest. Because one of the criteria for, or one of the parameter for finalizing your internal marks is your participation in sessions also. So उसके भी 5 marks हैं. तो जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट सिर्फ अटेंडेंस वो एक क्राइटेरिया है, पर दैट पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड एज पैसिव पार्टिसिपेशन. एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा? जब आप ऑनलाइन प्रेजेंट हैं, मतलब ऑनलाइन मतलब सिर्फ लॉगिन किया वो नहीं, एक्टिव चाहिए हमारे को. एक्टिव मतलब कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट. और पार्टिसिपेशन कब बढ़ेगा? जब आप पढ़ के लेक्चर के लिए आएंगे तब. जितना आप पढ़ेंगे उतना हमारे लिए भी फायदे में, क्योंकि जब तक in organizational behavior we will be discussing stress, and it has been proved. Normally we say that the results of a particular work is best when there is no stress. This is normal saying, but the findings of various researchers says that this statement is absolutely incorrect. No stress doesn't guarantee best performance, but the research has shown that moderate stress should be there. We are not talking about we are talking about moderate stress. Moderate मतलब थोड़ा स्ट्रेस. एक्सट्रीम स्ट्रेस होगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत कम होगा. नो स्ट्रेस रहेगा, हम लोग केयरलेस हो जाते हैं और फिर हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है. मॉडरेट स्ट्रेस में थोड़ा सा कहीं तो भी अगर स्ट्रेस रहेगा कि अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, या मेरा सैलरी उतना नहीं रहेगा, या मैं शायद मेरा ऑर्गेनाइजेशन में जो ये है जॉब है वो ही शायद प्रॉब्लम में आ जाए. ये थोड़ा सा स्ट्रेस रहे तो जो इंसान है वो अपने आप, वी आर ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन टेंडेंसी है वो, अगर थोड़ा सा प्रेशर रहे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं. एंड सेम वी एज टीचर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. आप अगर हमारे को सेशन में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा हो सकता है कि 10 में से शायद हमारे को 8 क्वेश्चंस के आंसर पता हो और 2 क्वेश्चन के या 1 क्वेश्चन का पता ही ना. नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मैं और तैयारी करके लेक्चर के लिए आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे एंड आई वांट टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन. But the moment I come to know that students are not coming prepared, I will also stop preparing for the session. It's a human tendency. We all are human beings. It is not that only students are human beings and teachers are machines. We are also human beings.
So it is better for both the students as well as for the teachers, right? So we were discussing actual delivery. So the example given by Anurag is absolutely correct. Actual delivery, as the meaning of the word itself says, actual, real, means buyer has paid for the mobile and buyer has received the possession. So that is actual delivery. Buyer has paid the price of the refrigerator, and next day at 11 a.m. he received the refrigerator at his place. That is called as, again, actual delivery. So it doesn't mean that it should always be immediate. It can be after 2 hours, it can be after 1 day, it can be after 3 days also. Actual delivery means the price, you have paid the price for a particular thing and you have received that thing only. That is actual delivery. मैंने रेफ्रिजरेटर का प्राइस पे किया और मुझे वॉशिंग मशीन मिला. दैट इज नॉट एक्चुअल डिलीवरी, बिकॉज अगेन यहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वो ही गलत हो गए. मैंने प्राइस किसका पे किया? रेफ्रिजरेटर. एक्चुअल में मेरे को डिलीवरी क्या मिली? वॉशिंग मशीन. तो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन ही गलत हो गया. यहां पर सेलर नहीं बोल सकता कि गुड्स तो मिला ना आपको, so actual delivery has taken place. So this cannot be called as actual delivery. I have paid for the refrigerator and the moment I receive the refrigerator at my place, it will be called as actual delivery. Now the next one, symbolic delivery. Again, if you know the meaning of the word symbolic, rest is very clear. Symbolic delivery, yes. What is Sir, symbolic can I give delivery? example related? Yes. Please go ahead. Hello, sir. Yes, go ahead. Okay. For symbolic delivery, I will share one example. Suppose A and B are two persons, and on birthday of B, he wishes a car as a gift from A, and A purchases the gift, that is car, and handed the gift along with the documents to Mr. B. So in this case, I think it is symbolic delivery. Okay. So half it is correct. But when you are using this word gift, then there cannot be contract of sale. Contract of sale will take place only. We had discussed in the last lecture the essential elements of the contract of sale. One of the essential element is monetary transaction. If one friend is giving gift to the other friend on the occasion of his birthday, then it cannot be called as contract of sale. Although you can say this can be called as symbolic delivery, but ultimately it will not become a contract of sale. Symbolic matlab sanketik. So symbolic delivery, and I know that each one of you is aware of what is symbolic delivery. सबको पता है, सबने देखा है symbolic delivery क्या होती है. So 50% you are correct. क्या symbolic delivery? कार की डिलीवरी हुई, पर कैसी हुई? एक्चुअल डिलीवरी हुई क्या? नो सर. नहीं. तो सिंबॉलिक डिलीवरी. तो हाफ इट इज करेक्ट. पर क्योंकि यहां पर गिफ्ट है इसीलिए हम लोग इसको नहीं बोलेंगे कि पूरा करेक्ट है. यस सर. हेलो. यस. Sir, I have one example. Me and my friend went to take delivery of my friend's new car. So that car was standing in the parking area of that showroom, and the sales manager handed over the keys of the car. So that keys is the symbol of the delivery. So it may be a symbolic delivery. Very good. It is absolutely correct. Symbolic delivery.
you have paid the price of the car and the salesperson has handed over you the documents as well as keys of the car, and the possession you will be getting after 4 hours or after 5 hours, because some things are to be done, washing and all polishing, washing, that is to be done. So possession you will be getting after 5 hours, but delivery has taken place. So right now it will be called as symbolic delivery. After 5 hours, when you will actually getting the car delivered to you, that it will be called as actual delivery. तब वो actual होगा, पर अब वो क्या है? Symbolic delivery. आपने कार का पैसा दे दिया, कार का अब जो भी उसको धोना रहेगा, उसको पॉलिश करना रहेगा, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगता ही है, कभी कभी 1 दिन लग जाता है, तब तक आपको कीज मिल गए हैं कार के, आपको पेपर्स मिल गए हैं कार के, आपके नाम का बिल आ गया है कार का, तो ये जो डिलीवरी है दैट विल बी कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी, कि आपने कार खरीद ली है, आपको कार मिल गई. नाउ द लास्ट वन is called as constructive delivery. Now in the first 2 types of delivery of goods, that is actual delivery and symbolic delivery, 2 parties are involved. One is seller and the other one is buyer. When we talk about constructive delivery, here 3 parties are involved. One is seller, one is buyer, and the other one is a third party. And that delivery is called as constructive delivery. Now here, the third party is an independent party. Now for example, buyer has purchased the refrigerator, but the refrigerator is in the possession or is lying in the godown of the third party. Now there is a contract between the seller and the third party who is having a godown. Third party is having a godown, and the contract between the seller and the third party is that for some commission, for some percentage, for some salary, or whatever the adjustment is between them, he is keeping the goods of the sellers in his godown. Now refrigerator has been purchased by the buyer, buyer has paid the money. Now here the seller will inform the third party that Mr. So and so has paid for this particular model of refrigerator. So please deliver this model of refrigerator to the address of Mr. So and so. So here 3 parties are involved in the contract. One is seller, the other one is buyer, and the last one is the third party. दोनों जो हमने पहले देखे उसमें क्या है कि सेलर एंड बायर 2 ही पार्टीज, बायर ने पैसे दिए, सेलर ने इमीडिएट डिलीवरी दे दी तो रियल डिलीवरी. सेलर अगर बोलता है कि नहीं 2 दिन के बाद पोजीशन दूंगा तो 2 दिन के बाद वो एक्चुअल डिलीवरी बनेगी. सेलर ने अगर बोला कि अभी कीज ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, बिल ले लो, आपने पैसा दे दिया है, कार आपको 6 घंटे के बाद या कल तक मिल जाएगी, सिंबॉलिक डिलीवरी. 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व. अब यहां पर क्या हो रहा है कि सेलर ने बायर से 20,000 रुपए लिए रेफ्रिजरेटर, पर रेफ्रिजरेटर सेलर के पास है क्या? नहीं, वो किसी तीसरी पार्टी के पास. बायर उस तीसरी पार्टी को नहीं जानता. सेलर तीसरी पार्टी को इंस्ट्रक्ट करता है कि एक
बायर है, ये उसका नाम है, ये उसका एड्रेस है, और ये उसकी पसंद किया हुआ या उसने खरीदा हुआ फ्रिज का नंबर, जो भी मॉडल नंबर है, कलर है, वो सब डिटेल्स उसे बता देता। और यहां पर थर्ड पार्टी डिलीवर करता है किसके घर पर? बायर के घर पर। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट टाइप ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड एज constructive delivery. So these are the three types of delivery of goods. First one is actual, then symbolic, and then constructive. What's the time now? Okay, so this rules regarding the delivery of goods we will be discussing in the coming lecture. So we need to stop as we are having only just 1 minute. Okay, Sir. That is also over. It is 7 o'clock. Hello. So we will wait here. Yes. Sir, can you give another example for constructive? In constructive delivery, there are three parties involved. Suppose if you have purchased an LCD, buyer went to the electronic showroom, he checked various models that were kept in the showroom, and he finalized one model. He asked for the price. The seller told him that it will cost you 40,000 rupees. He paid 40,000 rupees for that model, and the seller confirmed him that you will receive this model by today evening or by tomorrow afternoon. But in constructive delivery, what happens is the seller is not managing the godown. जो वेयर हाउस है सेलर का, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका वेयर हाउस है ही नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी थर्ड पार्टी से, और उसका जो सामान है दुकान में तो सैंपल पीसेस है, जो एक्चुअल उसका बहुत सारा सामान है, जैसे एक एक मॉडल के 2 3 4 पीस रहेंगे, वो सारे पीस उसने कहाँ रखे? तो तीसरा कोई व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा गोडाउन है, और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मेरा जो भी सामान आएगा वो सब आपके गोडाउन में रहेगा। अब यहां पर सेलर ने तो बायर को बता दिया कि शाम तक आपको पहुंच जाएगा, बायर यहां पर नहीं भेज रहा है एक्चुअल। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो सेलर है वो थर्ड पार्टी को फोन करता है कि ये एक व्यक्ति है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, और उसके पसंद किया हुआ जो भी एलसीडी टीवी है, अब आप ये एलसीडी टीवी वहां पर उसके घर तक पहुंचा दीजिए। पहले दो इसमें हमने क्या देखा कि सेलर ही खुद प्रोविजन करता है, खुद लेके जाता है, या उसी के टेम्पो में जाता है, या उसी का आदमी लेके जाके वो माल डिलीवर करता है। यहां पर एक तीसरा पार्टी आएगा जो सेलर भी नहीं है, वो थर्ड पार्टी आपके घर में डिलीवरी करके जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to be kept in mind is for constructive delivery there are three parties. First one is seller, second one is buyer, third one is the third party which is not known to the buyer को अभी ये चीजें पता नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है जो लेकर आएगा। ये सिर्फ सेलर और थर्ड पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सेलर और थर्ड पार्टी के बीच में है। इसके बारे में बायर को नहीं पता है। बायर को सिर्फ इतना पता है कि मैंने सेलर की दुकान में ये टीवी पसंद किया है, सेलर मुझे डिलीवरी देगा। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में प्रॉब्लम कब होता है? जब अगर एक्सीडेंट हो गया तो। एक्सीडेंट हो गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉम्पेंसेट करने की? बायर को, सेलर की या थर्ड पार्टी की? बायर को तो थर्ड पार्टी के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए बायर किसके पास जाएगा कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए? सेलर के पास। अब सेलर किससे पैसा वसूल करेगा? वो थर्ड पार्टी से। सो थर्ड पार्टी इज नॉट इन पिक्चर फॉर बायर, इट इज ओनली इन पिक्चर फॉर द सेलर। सो इन केस ये सब कब होता है क्लियर और कब ज्यादा डिटेल होता है? जब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है और कॉम्पेंसेशन देने की बात आती है, डैमेजेस देने की बात आती है, तब पूरा क्लियर होता है कि वेदर
it was an actual example of actual delivery or constructive delivery. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में भी जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट के, जो सेलर और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है, वो चेक किए जाएंगे कोर्ट में, और उसके बेस पे फिर ये बताया जाएगा कि हु शुड पे द कॉम्पनसेशन टू द बायर, द सेलर और द थर्ड पार्टी. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, thank you. I thought that lecture is already over and someone has closed the link also. Achha, so No, sir, still thank it you is so on. Okay, thank you. Thank you everyone for joining today's session. In the next session, we will try to complete the second unit if possible. Only 3-4 topics are remaining and simple topics are there, so we will try to complete that. Sure, Right? sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you Thank you, everyone. sir. Thank you, sir.